Hey guys, welcome you all on this amazing YouTube channel that is Study Edutech. So, today is our first live stream and this is of chapter number 2 Components of Food class 6. So, let's get started. So, today is Components of Food class 6. So let us enjoy the session and then we will go to menti.com. Okay, so components of food. Now it talks about the components of food कि हम food में क्या क्या खाते हैं. Okay, components of food के अंदर क्या क्या components होते हैं, क्या क्या parts होते हैं. Okay, nutrition. So हमारा first term जो है वो है nutrition. The process of consuming nutrients required for the growth and development of a body and to obtain एनर्जी इज नोन एज न्यूट्रिशन. मतलब न्यूट्रिशन जो होता है जो कि हम लेते हैं ताकि हमारी ग्रोथ हो सके और डेवलपमेंट हो सके हमारी बॉडी का. ओके, और हमें एनर्जी मिल सके किसके थ्रू? न्यूट्रिएंट्स के थ्रू. ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है, आवर बॉडी कंटेन्स 3 main substances called nutrients. Okay, so 3 main substances are nutrients. Main substance are nutrients and other are also nutrients, but they are also main, but they are not written over here. So these main are fats, proteins and carbohydrates. Fats, proteins and carbohydrates. Okay, and in addition और हमें क्या क्या लेना चाहिए? Water, salts that is minerals, vitamins and fibers, or we can say roughage. Okay, so these are the main components of the food diet. Now what is diet? Diet is the amount of food eaten by a person at a time. मतलब डाइट जो होता है जो कि हम खाना लेते हैं एक टाइम के लिए. ओके, फॉर अ टाइम. ओके, सो न्यूट्रिएंट्स अब कौन से होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, roughage and water. Okay, carbohydrate, protein, fat, vitamin, minerals, roughage and water. Okay, so these are all the nutrients. Okay, also like the session. Okay, and share it as much as you can. Okay, so our first topic is carbohydrate. Now, carbohydrate provides energy to our body. Carbohydrates provide energy to our body. Now, these carbohydrates are also known as energy giving food. This is very important. May this question can come in the Menti. Okay? This is important. So, carbohydrate हमें energy देती है और carbohydrate जो है उनको वो बहुत ज़्यादा energy देते हैं इसलिए उन्हें हम बोलते हैं energy giving food. Okay? So this is important point to learn about. Okay, next is there are 2 types of carbohydrate in food. Now carbohydrate के भी 2 types होते हैं. They are sugar and starch. These are very important. You have to learn. This may come in the Menti questions. Okay, so you have to learn this. Okay, now carbohydrates parts. These are sugar and starch. Now sugar is also known as simple carbohydrate. Sugar is also known as simple carbohydrate. Now, fruits, honey and table sugar are sources of sugar carbohydrate. Okay, fruits, honey and table sugar are sources of sugar carbohydrates. Starch. Starch is also known as complex carbohydrate. मतलब शुगर को हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं और स्टार्च को हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं. ओके, कॉर्न, पोटैटो, व्हीट्स एंड ब्रेड्स आर सोर्सेज ऑफ स्टार्च. अब स्टार्च के क्या सोर्सेज है? कॉर्न, पोटैटो, व्हीट एंड ब्रेड. ओके, प्लांट्स स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ स्टार्च. जो प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ starch. When we eat source or sugar
and starch, our digestive system breaks them in the form of glucose. जब हम शुगर और स्टार्च खाते हैं तो जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में जब वो जाते हैं तो वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं और किसके फॉर्म में आ जाता है, ग्लूकोज के फॉर्म में. Now glucose is the simplest form of sugar. This is very important. Glucose is the simplest form of sugar. Question may also come like this. Sugar's simplest form is, answer will be glucose. Okay. If it is then absorbed by the blood, okay, it which gives us energy. Now जो glucose होता है वो कौन ले लेता है, ये ग्लूकोज जो है वो किसके थ्रू ऑब्जर्व किया जाता है, किसके थ्रू वो लिया जाता है, ब्लड के थ्रू. ओके, ब्लड उसे ले लेता है एंड ताकि एनर्जी मिल सके. नाउ कार्बोहाइड्रेट जो है उसके अंदर सम केमिकल्स हैं. दे आर कार्बन, सॉरी यहाँ पर दीज विल नॉट कम. ओके ओके, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. सो देखो कार्बन में CORB है ना, इतना, सॉरी इतना नहीं होगा, अभी मैं आपको बताता हूँ इसका नेम कैसे बना है. ओके, जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो ये इधर नहीं आएगा. नाउ कार्ब, ओके, ये इतना यहाँ से बना है और जो इसका O है वो यहाँ से ले लिया गया है कार्बो में, और हाइड्रोजन इसके बाद में हाइड्रा. ओके, फिर 8 लगा दिया गया है पीछे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. ओके, सो नेक्स्ट इज प्रोटीन. नाउ प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन बॉडी बिल्ड करते हैं इसलिए उन्हें बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड. इट इज नीडेड बाय अ बॉडी टू यहाँ पर आर में ये स्पेलिंग मिस्टेक है, बाय आर. ओके, OUR. It is needed by our body to repair damaged cells, tissues and for muscle building. ये प्रोटीन जो है वो किसके लिए काम आता है, रिपेयर करता है हमारे सेल्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज और मसल्स. ओके, और मसल को बिल्ड भी करता है. ओके, और मसल्स, ऑर्गन्स एंड ब्लड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. मतलब जो मसल्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ब्लड्स होते हैं, वो किससे बने हुए होते हैं, प्रोटीन से. ओके, किससे बने हुए होते हैं, प्रोटीन से. यंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन रिच फूड बिकॉज दे आर स्टिल ग्रोइंग. जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उनको ज्यादा प्रोटीन खाना चाहिए. वाई, बिकॉज वो अभी ग्रो कर रहे हैं ना, और हमें पता है प्रोटीन किसके लिए वर्क करता है, for growing muscles and building them. Okay, now sources क्या है प्रोटीन के, sources of protein are pulses, meat, fish, egg, grain and soybean. now जो इसके sources है, मतलब जिससे हमें प्रोटीन मिलता है, वो है pulses, meat, fish, egg, grain and soybean. Okay, so let's move to next topic, that is fat. Now fat gives more energy than carbohydrate. जो फैट होता है वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी देता है, और जो एक्स्ट्रा फैट हमारी बॉडी में आ जाता है वो क्या होता है, उसको हम लेटर यूज करते हैं, मतलब बाद में उसको हम यूज करते हैं. और ज्यादा फैट हो जाता है तो डिजीज हो जाती है, जैसे ओबेसिटी हो गई, कोलेस्ट्रॉल हो गया और अदर भी हार्ट डिजीज. मिल्क, फिश, एग, नट्स, बटर, मीट एक्सेट्रा आर sources of fats. Okay, so two types के fats होते हैं, saturated, unsaturated. Saturated जो होते हैं जो कि solid होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एग्जाम्पल है बटर एंड घी. अनसैचुरेटेड फैट में नॉर्मली वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर में, और एग्जाम्पल है ऑयल एंड मिल्क. सो नेक्स्ट इज विटामिन. So vitamins are needed for the proper functioning of the body and protect us from diseases. जो विटामिन होते हैं उससे हमें क्या होता है, हमें उससे प्रोटेक्ट होते हैं. ओके, हमें उससे प्रोटेक्ट होते हैं, हमें कोई डिजीज नहीं लगती अगर हम विटामिन लेते हैं. तो 13 विटामिन होते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे. विटामिन आर ऑल्सो नोन एज प्रोटेक्टिव फूड. Lack of vitamins are known as
or it can cause deficiency diseases. Okay, so it is important term to remember about. So next is same topic. Now vitamins are also of two types, water soluble and fat soluble. Water soluble are vitamin B complex, vitamin C, vitamin H. Okay, and these are not stored in body, they are regularly supplied to the by the food items such as citrus fruit, spinach and other green leafy vegetables. मतलब जो वाटर soluble vitamins होते हैं वो स्टोर नहीं होते हमारी बॉडी में, वो क्या होते हैं उनको वो बॉडी में हमारे वर्क करते हैं. ओके, जिससे क्या होता है ये स्टोर नहीं हो पाते है ना, ये वर्क करते रहते हैं. सो इसके एग्जांपल कौन से विटामिन है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन एच. नाउ फैट soluble vitamins such as A, D, E, K are fat soluble vitamins. These are used only when needed. These are stored in fat tissues of the body. नाउ जो एग्जाम्पल है फैट सॉल्युबल के वो है एडीई के. नाउ ये ओनली जब यूज किए जाते हैं तब व्हेन दीज स्टोर्ड इन फैट टिश्यूज ऑफ द बॉडी. जब ये कब यूज किए जाएंगे? जब हमारे बॉडी में इनकी जरूरत होगी और ये हमारी बॉडी के फैट टिश्यूज में अवेलेबल है. Now, vitamin D is prepared in the presence of sunlight by the body. जो विटामिन डी है वो कौन बनाता है? सनलाइट. ओके, किसके थ्रू बनता है? सनलाइट के थ्रू. जब सनलाइट होगी तो उससे कम बनेगा. ओके, नेक्स्ट वी हैव is minerals. Now, minerals help in the formation of bones, teeth, gums and blood. वो फॉर्म करते हैं bones, teeth, gums and blood cells. Now, there are two types of minerals, microminerals and macrominerals. These are same names, so we have to learn them firstly. These are also known as trace minerals. Microminerals को और हम क्या बोलते हैं? Trace minerals. Okay, so इनको हम trace minerals बोलते हैं because ये स्मॉल अमाउंट में चाहिए हमारी बॉडी के लिए. एग्जाम्पल्स हैं जिंक, आयरन, कॉपर, आयोडीन. नेक्स्ट है मैक्रोमिनरल्स. दीज आर लेस यूज्ड बाय आवर बॉडी. हाँ, एग्जाम्पल्स आर कैल्शियम. सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा माइक्रो. ओके, सो ये उल्टे हो गए. मैक्रो मिनरल्स को हम ट्रेस मिनरल्स बोलते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और इसके एग्जांपल है जिंक, आयरन, कॉपर, आयोडीन. और माइक्रो मिनरल्स जो है वो कम यूज होते हैं हमारी बॉडी के, सॉरी ये होते हैं ज्यादा, आर मोर यूज्ड बाय आवर बॉडी. एग्जांपल्स आर कैल्शियम, मैग्नीशियम, sodium, potassium. Calcium, magnesium, sodium, potassium. So these are the examples. Like the video, share it and subscribe to our YouTube channel Study Edutech. Now it's time for Menti. So like the video, share, again subscribe. I am again and again telling because we want you to come and join our channel. So go to menti.com and enter the code. What is the code? 85625674. 8562 space bar 5674. Okay. So next, let us go to Menti. Okay, wait for a while. Okay, so okay, so join this. Firstly, if there are five players at least, then we will go, otherwise we will not go. Okay, no
players. Why not players? I think there are no players. But I think you can say the questions, okay? So I should start it now. Okay. And carbohydrate, proteins, fats, and vitamins. Think fast. Think fast. So 8 seconds left. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. So the correct answer is carbohydrate. Okay. How many vitamins are there? 12, 5, 13, or 10? There are dash vitamins. Okay? 12, 5, 13, 10. So 8 seconds to go. 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Time's up. So the correct answer was what? 13. Okay? So next question is question number 3. Answer fast to get more points. Carbohydrates are of two types. These are. Now आपको इसमें आंसर टाइप करना है, ओके? So you have to type answer here. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Time's up. So the correct answer is what? Sugar and starch. Okay? So next question we have is, it's a quote. You get what you give. मतलब जो आप लेते हो, मतलब जो आपको मिलता है वो ही होता है जो आप देते हो. ओके, so it's an interesting quote, है ना? So next question 4 of 5. Fat soluble vitamins are A, E, K या फिर all are correct. A, E, K all are correct. Fat soluble vitamins. 3, 2, 1. Time's up. Answer is all are correct. Okay. So last question we will have is, let's see what's the last question.
What is deficiency of vitamin A? I think this is not a question which I have discussed today, but you must know this. वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसका आंसर, वो तो अभी हम देख लेंगे, बट इसका आंसर अभी बताया नहीं है, अपन ने पढ़ा नहीं है. So the answer here is what? Night blindness. Okay. So next we have okay.